अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। मैं मुश्ताक अहमद भट्ट टीचर HS लशमपुरा ज़ोन राजवार। आज के जो हमारा चैप्टर है, हम नए चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर का जो नाम है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले कि आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब हम इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल्स जो होते हैं वो जिनके वैल्यू वेरी होती हैं, उनका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे उनके बदले हम ABCD XYZ इस्तेमाल करते हैं। और वो इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, सपोज x + 3, ये एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन जब इसके दो साइड से x + 3 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जब इसमें हम टू वेरिएबल्स, तो हम इसको कहते हैं ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे ax + by, ax + by। सपोज ax + by + c = 0। सपोज 3x + 2y = 0, और 3x + 2y = 3, और 3x + 2y - 3 = 0। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबलों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक कॉपी की कीमत, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन से दुगना है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक्चुअली लिखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ताकि स्टेटमेंट हेको रिप्रेजेंट कर इन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन अस करो लेट नोटबुक अमुक कीमत हसा x, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is equal to x rupees, and the cost of a pen is equal to y rupees. By the question के मुताबिक or according to question से माना the cost of a notebook is twice the cost of a pen. As to cost of a notebook x, cost of a pen twice y. तो क्वेश्चन मुताबिक गो x is equal to 2y। यानी अकि नोटबुक की कीमत 2 पेन, ये 2 पेन ती 1 पेन। तो अस हेको ये रिप्रेजेंट कर, और x - 2y = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस कर हावन बनकन लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कत शक्ल मज ax + by + c = 0। इस बह गोरस वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बे इंडिकेट करना वैल्यू a, b तो c। लीनियर इक्वेशन पाओ तो लीनियर इक्वेशन गई द इक्वेशन इन विच द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तथ वन लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गई इन विच द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो ये हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आज 3, तथ वन क्यूबिक। तो इन वन वेरिएबल को यम अकु वेरिएबल करो इस्तेमाल, इन टू वेरिएबल यम करो। सपोज
as 2x plus 3y is equal to 9.35 var. This is on F form as ax plus by plus c is equal to 0. Here on is got 2x plus 3y is equal to 9.35 bar. Here on is 2x plus 3y minus transpose. Here on is your 9.35 bar upper root 0. Here you see ax by c, a b c is istimal coefficient, and as a constant term the coefficient of variable. A go coefficient of x, b go coefficient of y, c go constant term. The eighth choice here, a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to minus 9.3 bar. Part number z, x minus y divided by 5 minus 10 is equal to 0. You should ora as height. Ax plus by plus c is equal to 0. Which 8 formulas. The 8th choice. Agar is x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. Here on is 8.8 1 into x minus 1 by 5 into y minus 10 is equal to 0. In x, 1x, y or 5. Is 1 by 5 into y, that will observe the most go y by 5. So here a is equal to 1, b is equal to minus 1 over 5, c is equal to minus 10. 3 part minus 2x plus 3y is equal to 6. Go minus 2x plus 3y, shown on your go minus is equal to 0. The even is 8 formulas ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to minus 2, chunki coefficient of x minus 2, b is equal to 3 and a 3y, c is equal to minus a. So in part x is equal to 3y. Here on is it put with x minus 3y is equal to 0. 3y on mayapur I wrote 0. Chunki x to shas y this is constant term shanai this king. Till go here a is equal to x. So 1x. A is equal to 1. Here a is equal to 1. B is equal to minus 3. B is equal to minus 3. C is equal to 0. Points and part 2x minus 2x is equal to minus 5y. In Lehakon is like 2x minus 5y on the upper band plus 5y is equal to 0. Here h2x and coefficient of x 2, h till 2, b to 5, c to 0. You see a linear equation in two variables, so it's like an ax plus by plus c. You see a, b, the c is kind of variable constant coefficient of istimal, near constant term. You see x, y is kind of variable of istimal. At b, 3 part chart, same part chart, 3x plus 2 is equal to 0. Second part chart, y minus 2 is equal to 0. The
ٲٹھم part چھُ اَتھ ٲٹھم تہٕ last part چھُ اَتھ 5 is equal to 2x. Shame how 3x plus 2 is equal to 0. यह हेकन अस इत पट बन दूर तो लगान पता अत मे y कहें तो अगर मजीद तुम समझाने खतर हेक बह लिखित 3x plus 0 into y. 0 into y means 0 plus 2 is equal to 0. Here a is equal to 3. This coefficient of x is 3. B is equal to 0. 0y. Coefficient of y is 0. And y is the C is equal to 2. Second part. Y minus 2 is equal to 0. तो मतलब x छीन अत मज कह अस हेको इत पे हत 0 into x plus y minus 2 is equal to 0. अगर तुम यह हेकिन कर तुम हेकिन ये लिखित value of a is 0 क्या x छीन अत मज कह गो here a is equal to 0 b छासान y coefficient of y is 1. The C is minus 2 constant term. Item, the last part, 5 is equal to 2x. अगर 5 is बराबर 2x बह कि 2x बराबर 5. 2x बराबर तो तमो मतलब गो 2x 5 on यपोर minus 5 is equal to 0. Direct हा बता वैकेंस here a is equal to 2 because the coefficient of x is 2. B is हमेशा coefficient of y. Y छीन अत मे सह 0. C is constant term सह minus 5. Hope you have got this question. अपना ख्याल रखिएगा. मुश्ताक भट्ट. खुदा हाफिज़.